Okay, once again, welcome to the channel. This is Manish Yadav, your English teacher, and here we are about to go through a new chapter from the book of A Footprints Without Feet. The heading of this chapter is A Triumph of Surgery. Okay, triumph means victory, surgery means operation. Okay, it is very clear. You understand the meaning of these two words. Triumph means victory, Vijay. Surgery means operation. Okay, when an animal or a body is operated by the doctor is known as surgery, and the doctor who does the surgery is known as surgeon. Okay, so in this chapter we are about to talk a doctor whose name is Mr. Harriet. Okay, Mr. Harriet is the name of that doctor, and he is very popular. He is very popular for his experience and doctorship. Now, something has been written at the very beginning of this PDF. What is this? Let's have an overview. Tricky, a small dog, is pampered and overfed by his rich mistress. Tricky, a small dog. We are going to have an account of a dog. That is a small dog, and his name is Tricky. Okay, is pampered and overfed means you know flatulence around his body and overfed. Fatty more than neat, बहुत मोटा हो गया है, swelling हो गई है उसके पूरे शरीर में. By his rich mistress. Rich mistress means the lady who looks after or who domesticates the dog is a rich mistress. Means he sorry she gives the dog too much for eating. She looks after the dog very much. He falls seriously ill. He refers to the dog. Okay. He refers to the dog falls seriously ill. वो वास्तव में बहुत बीमार हो गया. His mistress consults a veterinary surgeon. Veterinary surgeon means the person who looks after or operate or treat animals. ओके, पशु चिकित्सक जिसको बोलते हैं उसको दिखाती हैं, कंसल्ट करती हैं. डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन? डज द डॉक्टर डू एन ऑपरेशन? डज द डॉग रिकवर? क्या डॉग ठीक हो जाता है? ये आपको थोड़ा सा क्लू दिया गया है इस चैप्टर के बारे में. ठीक है, सबसे पहले समझ लेते हैं कि हम इसमें पढ़ने क्या जा रहे हैं. एक कुत्ता होता है जिसका नाम ट्रिकी है. वो छोटा सा कुत्ता है और वो बहुत मोटा हो गया है. ऐसा लगता है कि हर तरफ उसके शरीर में पैर निकल रहे हैं, इतना मोटा हो गया है. और ऐसा इसलिए है क्योंकि जो मिस्ट्रीस हैं वो बहुत उसको खाना खिलाती हैं. और कुछ जानवरों को तो आप लोग देखते हैं कि खाए बिना इतने पतले हो जाते हैं कि स्किनी बोन हो जाती है उनकी. मतलब ऐसा लगता है दैट बोन्स आर पीपिंग आउट थ्रू द स्किन. हड्डियां स्किन से बाहर झांक रही होती हैं. ही फॉल्स सीरियसली इल, और वो कुत्ता बहुत गंभीर रूप से बीमार हो जाता है. उसके बाद क्या होता है? हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स अ वेटरिनरी सर्जन. एक पशु चिकित्सक को उसकी जो मालकिन होती हैं वो विजिट करती हैं. डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन? क्या वो ऑपरेशन करता है कुत्ते का? क्या कुत्ता ठीक होता है? ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. ठीक है, सो लेट्स गो थ्रू some questions at the very beginning of this chapter. What are these questions? Read about the questions. Find out what happens. Why is Mrs. Pomfrey worried about Tricky? Mrs. Pomfrey, this is the name of the dog's owner who was domesticating him. Mrs. Pomfrey, उस लेडी का नाम क्या होता है?
मिसेस पम्फेरी वरीड अबाउट ट्रिकी, ट्रिकी के बारे में वो क्यों परेशान होती हैं. सो द क्वेश्चन is asking about the problem of Mrs. Pumferi, why she was worried about the dog. Okay, dog's name is Tricky. Frequently I am telling that dog's name is Tricky and Mrs. Pumferi is the owner of that dog. And Mr. Harriet is the doctor, you know, veterinary surgeon. He is the writer or the narrator of this chapter as well. Okay, I refers to the doctor. Firstly, I would like to tell you I refers to doctor because this is the third question in this chapter at the very beginning. Now, Mrs. Pumferi was worried about Tricky, her dog, because she looks after the dog too much and she was well dedicated. Okay, she domesticates Tricky as her own child, and the dog was not healthy. He was suffering from serious illness, so that she was worried about his health. The second question, what does she do to help him? Is she wise in this? Yeah, Mrs. Pumferi, when she was aware about the health of dog, she consults a doctor. Okay, he was a veterinary surgeon, and this decision was wise of Mrs. Pumferi because the doctor hospitalized Tricky for some time, some day, and finally Tricky recovered from his condition. Okay, this is the answer of this question. Who does I refer to in this story? I refers to the narrator of this chapter, and the narrator of this chapter is Mr. Harriet. Okay, Mr. Harriet is a professional doctor. What kind of doctor he is? He is a veterinary surgeon, Pashu Chikitsak. Now, let's go through first paragraph of this chapter. I was really worried about Tricky this time. I refers to the narrator, Mr. Harriet. He says that he was really worried about the health of Tricky because Tricky was not healthy when the doctor saw him. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress, and I was shocked at his appearance. When the doctor was riding in his car, he saw the dog in the street with his mistress. He was walking along with his mistress in the street. The doctor, Mr. Harriet, was shocked seeing the appearance of dog, seeing the fatty body of the dog. He had become hugely fat. The dog was hugely fat. He was so fatty, like a bloated sausage, with a leg at each other corner. Okay, the dog was bloated sausage, फुला हुआ. ठीक है, बिल्कुल फुला हुआ था. विद हिज लेग, अपने एक पैर के साथ. आई मीन उसका एक पैर पूरी तरह सूज गया था, सूजन हो गई थी, स्वेलोइंग हो गई थी. इच कॉर्नर, ऐसा लग रहा था कि अ लेग एट इच कॉर्नर, उसके हर शरीर आई मीन हर हिस्से से, शरीर के हर हिस्से से एक पैर निकलता हुआ दिखाई दे रहा था, इतना मोटा हो गया था. हिज आईज, उसकी जो आंखें थी वो ब्लड शॉट, पूरी तरह से लाल थी, एंड रेउमी, और वाटरी थी. स्टेयर्ड स्ट्रेट, वो पूरी तरह सीधे देख रहा था, घूर रहा था. अहेड, सामने. एंड हिज टंग लोड फ्रॉम हिज जॉज, और उसकी जो जिह्वा थी, जो टंग थी, इट वाज lowered, it was hanging downward very loose. Okay, बहुत ही लूजली हैंग कर रही थी उसकी जो टंग थी. जैसे कुत्तों को आपने देखा होगा कि उनकी टंग बाहर को लटकी होती है. ठीक है, मतलब ऐसा लगता ही नहीं है कि उस टंग में एनर्जी होती है, ऐसे बिल्कुल लोल्ड होती है. ठीक है, लटकी हुई. Now Mrs. Pumferi has stand to explain. Mrs. Pumferi, the owner, the keeper of the dog, has stand. I mean, hurriedly she explained. What? He was so listless. I mean, listless.
energiless. He doesn't move a step, quickly. Mr. Harriet. Mr. Harriet. Now, this name has been given in this paragraph. This name belongs to the narrator. I mean, the narrator's name is Mr. Harriet. This name is very popular for the veterinary surgeon. ये जो नाम है पशु चिकित्सक के तौर पे बहुत फेमस है अब्रोड. He seemed to have no energy. वो बताती हैं कि जो मेरा कुत्ता है ऐसा लगता है कि इसके शरीर में एनर्जी नाम की कोई चीज़ है ही नहीं. ठीक है, बहुत बीमार हो गया था, बहुत धनी घराने की महिला ने उसको पाला था. ठीक है, उसके पास बहुत पैसे थे, वो बच्चे को बिल्कुल डॉग को अपने बच्चे की तरह पालती थी और खाना खिलाती थी. आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन. आई थॉट, आई का मतलब यहाँ पे मिस्टर हैरियट से है. मिस्टर हैरियट को लगा, हो सकता है ये माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कुपोषण. ठीक है, कुपोषण मीन्स lack of vitamins, lack of minerals, lack of nutrition, lack of energy. So I have been giving him some little extracts between meals to build him up, some malt and cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. अब ये बताती हैं, मिसेस पम्फेरी बताती हैं कि मैं इसको देती क्या थी, लिटिल एक्सट्रैक्ट्स. एक्सट्रैक्ट्स का मतलब क्या होता है, दैट समथिंग हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड आउट ऑफ मील्स, ओके, ग्रैंस, टू बिल्ड हिम अप, उसको एनर्जी देने के लिए. ये क्या दे रही हैं, माल्ट दे रही हैं एंड कॉड लीवर ऑयल दे रही हैं एंड बाउल ऑफ हॉर्लिक्स दे रही हैं. यहाँ कुत्तों को हॉर्लिक्स दिया जा रहा है, वाह. और देहात में बच्चों को हॉर्लिक्स नहीं मिलता पीने को. नाउ एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, ऐसा इसलिए वो करती थी कि वो आराम से रात में सो सकेगा. नथिंग मच रियली, और इससे अधिक कुछ नहीं करती थी. एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू. डॉक्टर का क्वेश्चन है, क्या आपने स्वीट देना बंद कर दिया है जैसा कि मैंने आपको बताया था. ओह, आई डिड फॉर अ बिट, मैंने थोड़े समय के लिए किया था. बट ही सीम्ड टू बी सो वीक, आई हैड टू रिलेंट. तो मुझे लगा कि मिठाई देने से ये और कमज़ोर हो रहा है, इसलिए मैंने रोक दिया. ही डज़ लव क्रीम केक्स. ये जो कुत्ता है ये क्रीम केक्स बड़ा पसंद करता है. एंड चॉकलेट्स एज वेल, और साथ साथ चॉकलेट्स भी बड़ा पसंद करता है. आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, मैं इसको मना नहीं कर सकती और इस चीज़ को मैं सह भी नहीं सकती. दैट द डॉग वुड डिज़ायर टू ईट समथिंग एंड आई विल रिफ्यूज़ टू गिव हिम. आई कांट हेल्प माई सेल्फ टू डू सो, मैं ऐसा नहीं कर सकती. ये तो काफ़ी कंपैशन की बात है, इमोशन की बात है. फॉर एग्जाम्पल, a mother, okay, suppose that Mrs. Pomfrey is domesticating the dog as her own child, okay, and he gives or she gives everything what the dog desire, or she adds some more delicious food in his dieting, okay, but she does not care about his health, whether it is beneficial, it is healthy for the dog or not. Same happens when a mother looks care of her own child. She doesn't care about her development of mind, development of physical, or any other kind of development. Okay, whenever father or anybody else scolds the child to do any unacceptable activity, the mother feels or worries about the child, that my child has been hurt, इसको हर्ट किया गया है मेरे बच्चे को. I mean nobody can scold a child in the presence of the child's mother. Same happens. तो मिसेस पम्फेरी जो हैं ये उस कुत्ते को इतना प्यार करती हैं कि ये समझ ही नहीं पा रही हैं कि मुझे कुत्ते को क्या खिलाना चाहिए और क्या नहीं खिलाना चाहिए. ये जो कुत्ता डिज़ायर करता है, जो उसे पसंद है, सब खिलाती जा रही हैं और एक्सेसिव अमाउंट में खिला रही हैं.
or it causes unhealthy physical structure of the dog. आगे क्या होता है चलिए देखते हैं. I looked down again at the little dog. I refers to Mr. Harriet. इन्होंने कुत्ते की तरफ देखा. That was the trouble. अब प्रॉब्लम थी. Tricky's only fault was greed. ट्रिकी की जो गलती थी वो सिर्फ थी ग्रीड. ग्रीड का मतलब लालच होता है. That he desires to eat chocolates, sweets and so many other things. He had never been known to refuse food. वो जानता ही नहीं था कि खाने को रिफ्यूज कैसे किया जाए. जैसे there are so many greedy people who always have the desire to have lots of excessive amount of food. जितना मिलता है खाते जाते हैं खाते जाते हैं. They are not worried of their stomach and the problem of health. वो अपने स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा सा भी नहीं सोचते. He would tackle a meal at any hour of the day or night. और ये सबसे बड़ी बात ये है कि किसी टाइम एट एनी टाइम इफ द डॉग वाज गिवन और ऑफर्ड फूड ही वाज हैविंग इट सीरियसली. वो बड़ी गंभीरता से उसको खा जाता था. ठीक है. ही डज नॉट रिफ्यूज फूड एट एनी टाइम. किसी समय खाना दो वो खाया जा रहा था. एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग मिसेस पम्फेरी हैड नॉट मेंशन्ड. और मैं बहुत सारी चीज़ों को गेस कर रहा था, नोटिस कर रहा था. दैट वाज नॉट मेंशन्ड बाय मिसेस पम्फेरी. जिस चीज़ को मिसेस पम्फेरी नहीं बता रही थी. ये बहुत सामान्य सी बात है. व्हेन वी विजिट अ डॉक्टर वी डू नॉट शेयर आवर ओन मिस्टेक्स ओके एंड केयरलेसनेस. जो भी हमारी लापरवाहियाँ होती हैं हम उसके बारे में नहीं बताते कि हम 8 बजे तक सोते हैं, हम बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, स्पाइसी खाना खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं. बस जाके पेट लेके बैठ जाते हैं कि डॉक्टर साहब आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल विद माई स्टमक. मैं अपने पेट से परेशान हूँ, सो प्लीज़ लेट मी बी ट्रीटेड. मुझे इलाज चाहिए. व्हेन डॉक्टर आस्क्ड for precautions and my activities daily lifestyle, so people do not share all the carelessness of theirs. बस वो इतना ही बताते हैं कि थोड़ी सी समस्या हो गई है, मैं ऐसा नहीं करता, दवा दे दीजिए मुझे, मैं ठीक हो जाऊंगा. नाउ आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज. क्या कुत्ते को आप एक्सरसाइज कराती हैं. अब भाई जाहिर सी बात है जो आदमी बहुत मोटा है या जो जानवर बहुत मोटा है वो एक्सरसाइज नहीं करता. He has stored lots of fat around his body. उसके शरीर में बहुत सारा फैट कलेक्ट हो गया है, कोलेस्ट्रॉल कलेक्ट हो गया है, तभी तो मोटा है. बट वी डू नॉट डू एक्सरसाइज. और हम एक्सरसाइज भी नहीं करते ना कराते उस टाइम, तो फिर हेल्थ और स्वास्थ्य तो डाउन होना ही होना है. वेल he has his little walks with me as you can see doctor. But Hawkin the gardener has been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately. Okay, now she adds about the activities of dog that he does walking with me as you can see. वो walking करता है मेरे साथ जैसा कि आप देख सकते हैं. But Hawkin the gardener of mine has been down with lumbago. वो यहाँ से चला गया है. ओके, माई गार्डनर डज नॉट मैनेज द टाइम विद माई डॉग, सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली. तो फिर मेरे डॉग को एक्स्ट्रा एक्सरसाइज नहीं मिल पाती है. एंड दैट इज़ वाई ही डज नॉट डू एक्स्ट्रा एक्टिविटी और एक्सरसाइज विद माई गार्डनर. एंड आई व्हेन आई गो फॉर वॉकिंग ही कम्स विद मी. वो मेरे साथ साथ आता है. अगले पेज पे चलते हैं. Let me erase the underlines. I tried to sound severe. Now I really mean this. If you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. The doctor advises
Mrs. Pomfrey, that what I want to say really, I really mean to say that if you don't cut his food right down, okay, if you don't stop giving excessive amount of food and giving creamy and fast food to the dog, you will uh, see him unhealthy and ill for the next time. तो फिर आपको वो बीमार ही दिखाई देगा. You must harden your heart and keep him on a very strict diet. You must harden your heart. जो आपके अंदर ममता छुपी हुई है, जो इमोशन छुपा हुआ है इस कुत्ते के लिए, जो प्यार छुपा हुआ है, उस चीज़ को आपको कम करना होगा. इसलिए क्योंकि आपको इस बच्चे के स्वास्थ्य को ध्यान देना है. भाई वो कुत्ता बिल्कुल उनके बच्चे जैसा ही था, ठीक है. जाहिर सी बात है, सी लव्स, बहुत प्यार करती थी उस कुत्ते को, तभी तो वो ऐसा नहीं कर सकती थी, रिफ्यूज़ नहीं कर सकती थी कि नहीं मेरा कुत्ता कम खाना खाए, मेरा बच्चा कम खाना खाए. अभी बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जिनके बच्चे काफ़ी धोंधू होते हैं, मोटे मोटे होते हैं, ठीक है, बट दे डू नॉट कट द अमाउंट ऑफ फूड, ओके. दे कांट हार्डन देयर हार्ट्स कि मेरा बच्चा कम खाएगा. बच्चा मांग रहा है कि मम्मी मम्मी मुझे जहर खाना है, तो वो इतने प्यार में और दुलार में अंधे होते हैं कि वो कहेंगे ले बेटा तुम मांग रहा है तो जहर भी खा ले. अब भाई जहर है क्या? एनीथिंग विच इज़ मोर देन नीड इज़ जस्ट लाइक अ पॉइजन. फॉर एग्जाम्पल फास्ट फूड, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ मनी, दैट इज़ आल्सो अ पॉइजन. तो जहर ही तो खिला रहे हैं. बच्चे ने कहा ठंडा पीना है, कोल्ड ड्रिंक पीना है, तो पैसा निकाल के दे दिए. बच्चे ने कहा खूब ढेर सारी मिठाई खाना है, तो मिठाई के लिए पैसे दे दिए. बच्चे ने कहा कि मुझे नूडल्स खाना है, इडली खाना है, सांभर खाना है, डोसा खाना है, वॉट एवर, दे ऑफर हिम मनी टू eat everything. Now what is this? This is just like giving poison to our children. Mrs. Pomfrey wrung her hands. Oh, I will, Mr. Harriet. I am sure you are right. Mrs. Pomfrey, she was agree. She was agree that okay, I'll cut the food right down, and I am sure that you are right. If you are a doctor, you may be right, but it is so difficult, so very difficult. She adds that it is so difficult for me to do, but I'll do. She set off, head down along the road, as she determined to put the new regime into practice immediately. Now, she was along with the dog, moving along with the road, alongside the road, and she was going to put new schedule into practice immediately. She started immediately to do and to add some practice in the activities of her dog and her own activities, so that the dog would be recovering from his illness. Okay, that's it for this meeting. We would be going to the next paragraph in the next episode and next day. So till then, stay home and stay safe. Wish you all the best to everybody. Keep learning and revising.